अभी तो स्टार्ट हुआ स्ट्रीमिंग। आ गया। क्या? 720। हाँ अभी आया क्वालिटी, अभी ओपी तो। हाँ क्वालिटी दिखा रहा है मेरे में। 1080 नहीं दिखा रहा है, 720 दिखा रहा है, बट बेस्ट है, ना ही कट हो रहा है और ना ही वो हो रहा है। हाँ टाइमलाइन वगैरह सब चल रहा है अच्छा। हाँ बेस्ट है ये। थैंक यू। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। कितने सारे स्ट्रीम कर दी मैंने। ये हो रहा। ओके डन। सो लेट्स स्टार्टेड। देखते हैं गाइस कि आज हम लोग देख पाते हैं, क्या सीख पाते हैं, ठीक है। और ट्रेड की यहाँ तक की बात है तो आज नहीं लेंगे, बट ये भी हो सकता है कि ले हम, ठीक है। कुछ नहीं कहा जा सकता अगर ये लगेगा ऐसे। और आज हम लोग ट्रेड ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और एक ये ऑफ कर देते हैं, ये रहा। डन। नाइट बोट लगा लो हेलो बोलने के लिए। नाइट बोट कैसे लगेगा? वो शाम को कर लेंगे हम लोग, एक बार नाइट बोट लगा लेंगे। उसका बहुत लंबा प्रोसेस आई थी, मैं भूल गया। बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है, थैंक यू लेजेंड। निफ्टी, ओ भाई साहब निफ्टी तो डे का हाई तोड़ गया यहाँ से। हम्म। निफ्टी ऊपर जा रहा है, वाह ग्रेट। निफ्टी ऊपर जा रही है। उसके बाद इधर देखते हैं क्या हो रहा है, कुछ तो ओपन हो। कहाँ तक जा सकता है ये? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओ। ये एक जबरदस्त सपोर्ट है ना, ये वाला। स्टेज 4। आफ्टर स्ट्रीम आज इवनिंग में फ्री हूँ सर। नहीं आईवी कैम वाला अभी कंप्लीट नहीं हुआ है लेजेंड, उसका भी थोड़ा इशू आई थिंक, बट देखूंगा आज ट्राई करके। देखते हैं, करेंगे थोड़ी देर में आईवी कैम। आईवी कैम हो जाएगा तो इस पे भी कर सकते हैं, है ना। ट्राई करूँ क्या अभी? करूँ क्या, करूँ करूँ करूँ? देखो आप अभी स्ट्रीम में देखना क्या हो रहा है, अभी आप देख सकते हो, रुको मैं करता हूँ आपको। ये मैंने ओपन किया आईवी स्ट्रीम, आपको दिखाता हूँ। ये मैंने डाला लैपटॉप में, इसमें लैपटॉप में वायर डाल दिया और फ़ोन में ओपन करता हूँ। ओपन कर दिया, अब वापस से मैं लगाता हूँ इसमें। ये देखो, ये लगा दिया फ़ोन में, आया, फाइल ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ नहीं हुआ। फ़ोन में हुआ भी नहीं कुछ, आई डोंट नो क्यों।
बस ऐसा ही पीसी में ऐसा ही हो रहा है, और उसके बाद इसमें कुछ हो ही नहीं रहा, सर्चिंग करके फिर रुक जा रहा है। कल मैंने वो डबिंग भी डाउनलोड किया था, मतलब ओपन ऑन किया था, अभी देखता हूँ फ़ोन में ऑन है ना, डेवलपर ऑप्शन, वेट, डबिंग ऑन है यूजिंग यूएसबी डबिंग, बट फिर भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा, पता नहीं क्यों, कुछ हो गया था या क्या, दोबारा से इंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा लग रहा है। देखते हैं। चलो बाद में ही करेंगे, ठीक है, कल करेंगे, मतलब बाद में करेंगे, आफ्टर स्ट्रीम, सही बोला आपने, आफ्टर स्ट्रीम ही देखा जाएगा इसको, इसको यहाँ लगा। सो ऑफ हो जाओ यार, तुमको क्या करना है, ये देखो भाई साहब, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जाओ जाओ। बैंक निफ्टी वापस से ऊपर चला गया, जहाँ था वहाँ पे चला गया। आई डोंट नो यार, मैं क्या देखूँ, मेरे को एक तो पता नहीं, मेरे को कुछ मतलब बहुत चीज़ सीखने की ज़रूरत है गाइज, ठीक है, तो मैं सोचता हूँ स्क्रीन टाइम हो जाएगा मेरा, एक तो ये ओपन ही नहीं हो रहा, पता नहीं इसको क्या हो गया, ओपन नहीं हो रहा ये, इसको पता नहीं क्या हो गया, अब स्टॉक्स खुल गया। ये मेरे फ्रेंड का है, ठीक है, मेरे फ्रेंड पे क्या मिल रहा है भाई, 400 रुपये मिल रहा है, नहीं चाहिए 400 रुपये। खुल गया, ओके, फंड कितना अपने पास, देख सकते हो अपना फंड है, 2000 रुपये बचा है ओनली। टेंशन, देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑप्शन चैन, ऑप्शन चैन क्या बोल रहा है, ऑप्शन चैन नीचे आ जाओ, 10,50,000 पुट, 14 लाख, यानी पुट खरीदने को बोल रहा है, सभी लोग कॉल खरीदे यानी पुट खरीदना पड़े, अगर इसमें पुट खरीदेंगे तो क्या हाल होगा, ये तो पुट ही बोल रहे हैं। ओके, देखते हैं जस्ट, यार ये हद हो गया यार, ये तो काम ही नहीं करता माउस, ओ आई भी, बिड प्राइस मतलब, बिड प्राइस, बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, ये कितने मिनट में होता है, अंडरस्टैंडिंग एज, 11:59 पे अपडेट हुआ ये, ऑप्शन,
बिड क्वांटिटी 9600, बिड प्राइस इतना, आस्क क्वांटिटी चेंजिंग इतना, एलटीपी इतना, आईवी मीन्स क्या होता है, वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, और चेंजिंग इन आईयू ओपन इंटरेस्ट 78,000। 12 एक मिनट, 10:55, ये बजट डे शो किस पे कर रहा है देखते हैं। This would help in enhancing income of cooperative societies and its members who are mostly from the rural and from farming communities. Tax relief to persons with disability. The parent or guardian of a differently abled person can take an insurance scheme for such person. The present law provides for deduction to the parent or guardian only if the lump sum payment or annuity is available to the differently abled person on the death of the subscriber, that is the parent or the guardian. There could be situations where the differently abled dependent may need payment of annuity or lump sum amount even during the lifetime of their parent or guardian. I propose thus to allow the payment of annuity and lump sum amount to the differently abled dependent during the lifetime of the parent and guardians, that is parent or guardians, attaining the age of 60 years. Parity between employees of the state and central governments. At present, the central government contributes 14% of the salary of its employee to the National Pension System, NPS, Tier 1. This is allowed as a deduction in computing the income of the employee. However, such deduction is allowed only to the extent of 10% of the salary in case of employees of the state governments. To provide equal treatment to both central and state government employees, I propose to increase the tax deduction limit from 10% to 14% on employers' contribution to the MPS account of state government employees as well. This would help in enhancing the social security benefits of the state government employees and bring them at par with central government employees. Incentives for startups. Startups have emerged as drivers of growth for our economy. Over the past few years, the country has seen a manifold increase in दिमाग के ऊपर से जा रहा है मेरे, ये समझना बहुत ही मतलब माइंड के ऊपर से चल रहा है रियली में। आई कांट अंडरस्टैंड दिस। मैं नहीं समझ सकता यार, बजट डे स्पीच और वो भी इंग्लिश में, ओ माय गॉड। तो ठीक है, डैशबोर्ड इंडियन ग्लोबल, इसमें कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा दिखाता है ना। तो बैंक निफ्टी 1.53, BSE सेंसेक्स अच्छा 1.45, निफ्टी बैंक निफ्टी भी 1.71। इंडिया विक्स क्या है यार, इसमें क्या आते हैं, टॉप गेनर्स, पैसा डिजिटल लोन 10% बढ़ा रियली में, पैसा लो डिजिटल 10% बढ़ा है, 12%। ओ माय गॉड, ये है क्या, आई डोंट नो ये क्या है क्या ये।
मंथली हो गया। डिजिटल लिमिटेड, पैसा लो डिजिटल लिमिटेड ओवरव्यू, ओवरव्यू पैसा लो डिजिटल लिमिटेड ओवरव्यू। बाय टारगेट बाय 660 650, टारगेट 725 लॉन्ग। न्यूज आइडियाज फाइनेंशियल, देखिए जरा फाइनेंशियल में क्या दिखा, ओवरव्यू, अर्निंग इनकम टैक्स, अर्निंग बैलेंस शीट कैसे दिखाते हैं, 216 रेवेन्यू, नेट इनकम, प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट 3.2 बिलियन, कैश इनकम स्टेटमेंट देखते हैं कैश, ग्रॉस प्रॉफिट 2015 में इतना, टोटल रेवेन्यू, नेट इनकम, टोटल रेवेन्यू नेट इनकम इतना और ग्रॉस प्रॉफिट। यार इनकम जब इतना है, टोटल रेवेन्यू है, इनकम रेवेन्यू, ये क्या बात हुई। छोड़ो यार, हमको इसकी कंपनी फंडामेंटल का क्या है, हम लोग टेक्निकल देखते हैं ना, टेक्निकल में कितना पैसा दे रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। हम लोग को क्या करना है गाइस, फंडामेंटल देख के अपने को तो पैसा बनता है, क्योंकि बिकॉज वी आर ट्रेडर। 12% गेन किया गाइस आज, यूनिक है ना। 12% बोले तो ये रहा, जहाँ 631 पे मिल रहा था आज बढ़ गया 50 रुपये भाई, पर द मोमेंट 26 15 नेक्स्ट यार, बढ़ रहा है क्या ये फिर। अच्छा, HFCL टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स कौन है भाई, 5% 41, ये कौन है, सुबेक्स लिमिटेड, SUBE 5% लॉस, ये गैप अप डाउन ही हुआ है 47, गैप अप डाउन हुआ है, इसको डाउन ही हो रहा है, आई डोंट नो क्यों। ठीक है, अर्निंग डेट 31 जनवरी, पीरियड एंडिंग December 21, अर्निंग्स फाइनेंस हार्ट यार नहीं देखना है गाइस, इसके लिए कुछ बनाया जाए स्ट्रेटेजी, एक बार निफ्टी में देखा जाए कुछ हुआ तो।
इतना बड़ा हाइप पीरियड था, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा यार। 244 ठीक है। अगर जो मान ले हम 5 मिनट के टाइम चार्ट पे इसको करें, 1 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे कुछ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। क्या हो रहा है, कुछ तो नहीं है। इसके नीचे आता है तो मतलब बाई करना है, जो कि आया नहीं, और इसके ऊपर गया है तो बाई करना है। अभी जी यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, एक मिनट दिखाता हूँ, लॉन्ग ठीक है। अगर ये यहाँ पे बाई ठीक है, और हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, दिन का हाई तो हम लोग को यहाँ पहुँचना भी तो चाहिए। 1:1 कनेक्ट है यहाँ देखो, 61 का टारगेट, और ये 1:1 तो मतलब मिल गया। वाह, दिस इज अमेजिंग। इसलिए कहते हैं कि स्टॉप लॉस और प्रॉफिट, चलो लगा के रख देते हैं। अच्छा, देन आफ्टर, बट यहाँ से जैसे ही वहाँ गया था, इसको बस वहाँ पे बुक कर लेना चाहिए था। तो अच्छा, पीवीटी पे है अपना, ये अगर ये यहाँ से ऊपर गया, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, डाउन आ गया ठीक है, यानी ऊपर से सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ से करते हैं, फिर यहाँ से गया, यहाँ से फिर ये कोशिश किया था ऊपर जाने की, लेकिन फिर से सेलिंग प्रेशर आ गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ से डाउन करके टोटल रिमूव ड्राइंग ठीक है। तो एक बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ से कितना, यहाँ से बहुत ज़्यादा लाए थे, 100 पॉइंट नीचे लिया था, लेकिन वापस से बाइंग प्रेशर आ गया। अरे यहाँ भी तो एक बाइंग प्रेशर बनता था, यहाँ पे अगर एक परचेज किया जाए, बिकॉज यहाँ से पूरा दिख रहा है कि यहाँ पे, तो यहाँ से लेके 90 पॉइंट मिल रहा है। अगर ये यहाँ पे हम अगर ये एक लॉन्ग लॉन्ग यहाँ पे एंट्री, ओके। सो ये रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा ये, नहीं ज़्यादा हो गया, कितना स्टॉप लॉस रहेगा, 498, हाँ ठीक है, 498, और 34 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:2, 368 का टारगेट रहेगा, 68, 68 का टारगेट, यानी 8 पॉइंट, 601। गाइस, देन आफ्टर 1:2, क्या ही मस्त ट्रेड बना है यार। मैं कहाँ था, निफ्टी बैंक में भी अच्छा खासा ट्रेड बन चुका है गाइस ठीक है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ भी एक ट्रेड बन सकता है मे बी, क्योंकि क्यों, मतलब यहाँ क्यों बनेगा ये। बट क्यों यहाँ कुछ मतलब कुछ बड़ा इशू नहीं हो रहा है ठीक है। 2 ट्रेड यहाँ तो मैं मिस कर गया, बिकॉज ये भी 70 पॉइंट कम नहीं होते हैं आई थिंक, और यहाँ भी था,
अच्छा खासा, ठीक है। तो ये पिविट पे है गाइज, ठीक है। पिविट का एकदम बहुत ही बेहतरीन वाला एक बनाते हैं, हमारे स्टॉकिंग है, नेक्स्ट लेवल वाले बनाते हैं वो, ठीक। यहाँ पे जैसे ही गया था इसको सेल कर देना था, है ना। 621। तो नीचे जाने का एक सिम्टम्स है गाइज, क्योंकि देख सकते हो सेलर कितने हावी हैं, पूरे कैंडल 50% से ज़्यादा खा गए हैं, ठीक है। 50% से ज़्यादा इस पे सेलर हावी है, तो मे भी ये नीचे जा सकता है, आई डोंट नो क्यों, बट ये जा सकता है। रेशियो 2.65। मोस्ट एक्टिव बाय वैल्यू, रिलायंस का क्या हाल है। 1% बढ़ा है गाइस रिलायंस भी। वाह यार, क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है हम लोगों का, नेक्स्ट लेवल की क्वालिटी अपना। ओके, निफ्टी। अच्छा, बैंक निफ्टी में देखा जाए, बैंक निफ्टी में तो सीधा बनता था कि यहाँ से हाई कौन सा था, यहाँ से एंटर। ये यहाँ 275 के स्टॉप लॉस, दिस इज नॉट गुड यार। बट 275 गाइस,
तो 75 का हुआ था, तो 1:1 यहाँ भी होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी करेज, हिम्मत, गुर्दा सब चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस जेन्युइन रहना चाहिए। अब आपका यहाँ यहाँ तो ये कट जाता है आपका, इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ रखोगे तो बेशक चला जाए। देखिए फिर से उठ रहा है, आपको क्या लगता है? अच्छा है, गुड है। 194 का, और क्या चाहिए बैंक निफ्टी में? मारा जा क्या ट्रेड? आ जाओ, ऑनलाइन ट्रेड मारते हैं इसमें। ठीक है सर, निफ्टी ग्लोबल, ग्लोबल पॉजिटिव है, सब चीज़ पॉजिटिव है, तो इंडिया में भी पॉजिटिव है। गाइस ये भी है। अच्छा, फ्यूचर एंड ऑप्शन, सन फार्मा, टाटा स्टील, फ्यूचर ओआई। ग्लोबल पॉजिटिव तो इंडिया भी पॉजिटिव। आई डोंट नो गाइस, ये तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है, क्लिक क्यों नहीं हो रहा भाई? गया, जीवन गया इसका। अच्छा, देन आफ्टर और क्या, मार्केट न्यूज। टाटा स्टील जनवरी 2020 रिकॉर्ड न्यू हाई, नेक्सॉन हायरियर अल्ट्रोज टियागो पंच। अच्छा, ये टाटा के बारे में न्यूज है। टाटा मोटर्स, क्या हाल है टाटा मोटर्स का? क्या मूर्ख बनाता है भाई ये चैट। चल, यस, स्टॉप लॉस हिट। कितने का स्टॉप लॉस था? ओके ओके, इस फोन में ही करते हैं, कोई जरूरी नहीं है सिस्टम में करने की। ठीक है, सब बढ़ रहा है, पीएन भी घट रहा है, ये तो अलग ही अंदाज में चलता है यार इसका तो। पूरी दुनिया बढ़ रही है, ये घट रहा है, बताओ।
बैंक निफ्टी का पी ये 34 एट दैट टाइम में कितना मिल रहा है बोलते हैं ना, ये क्या नाम है इसका, ओ भाई साहब, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। जी इसको तोड़ के आया, डाउन जाएगा 100%। बट मेरे को इतना आउट ऑफ मनी नहीं लेना है ना, कोई मतलब नहीं बनता गाइस आउट ऑफ मनी लेने का। लेकिन ये भी बात है, आउट ऑफ मनी नहीं लोगे तो क्या लोगे, ऑप्शन चाहिए में भाई। एट द मनी का प्रीमियम है गाइस 564, 572। गाइस देखो इतने से नहीं होता, ये इन द मनी में मेरा पैसा डूब जाएगा, इससे बेहतर है कि मैं कहीं और लगा दूं। ठीक है, टीबीएट इनके शेयर खरीद के रख दूं मैं, कुछ पैसे आएंगे, उससे बेहतर मेरा ये रहेगा। और ऑलरेडी एक ये मैंने खरीदा है पीएनबी, ससुरा पीएनबी, 2 रुपये लॉस। बताओ इसको क्या जरूरत थी। पीएनबी देखते हैं, पीएनबी एनएससी वाला है ना, पीएससी। एनएससी पे नहीं, आज के बाद बीएससी पे खरीदूंगा यार। ये क्यों घट रहा है।
तो what we do guys, लोग बैंक निफ्टी निफ्टी देख नहीं सकते? ये आज भी तो प्रीमियम नहीं खाएगा, गोल गोल घूम के बस झूठ मूठ का हाइप क्रिएट कर रखा है सभी लोगों ने।
startups. Eligible startups established before 31/3/2022 had been provided a tax incentive for 3 consecutive years out of the 10 years from incorporation. In view of the COVID pandemic, I propose to extend the period of incorporation of the eligible startup by 1 more year, that is, up to 31/3/2023, for providing such tax incentives. Incentives for newly incorporated manufacturing entities under concessional tax regime. In an effort to establish a global competitive business environment for certain domestic companies, a concessional tax regime of 15% was introduced by our government for newly incorporated domestic manufacturing companies. I propose to extend the last date for commencement of manufacturing or production under Section 115BAB by 1 more year, that is from 31st March 2023 to 31st March 2024. Scheme for taxation of virtual digital assets. There has been a phenomenal increase in transaction in virtual digital assets. The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. Gift of virtual digital asset is also proposed to be taxed in the hands of the recipient. Litigation management to avoid repetitive appeals by the department. It has been observed that a lot of time and resources are consumed in filing of appeals which involve identical issues. Taking forward our policy of sound litigation management, I propose to provide that if a question of law in the case of an assessee is identical to a question of law which is pending in the appeal before a jurisdictional high court or Supreme Court, in any case, the filing of further appeal in the case of this assessee by the department shall be deferred till such a question of law is decided by the jurisdictional high court or the Supreme Court. This will greatly help in reducing the repeated litigation between taxpayer and the department. Taking forward our efforts to further promote the IFSC, I hereby propose to provide that income of a non-resident from offshore derivative instruments or over-the-counter derivatives issued by an offshore banking unit, income from royalty and interest on account of lease of ship, and income received from portfolio management services in IFSC shall be exempt from tax subject to specified conditions. Rationalization of surcharge. In the globalized business world, there are several work contracts whose terms and conditions mandatorily require formation of a consortium. The members in the consortium are generally companies. In such cases, the income of these AOPs has to suffer a graded surcharge up to 37%, which is a lot more than surcharge on the individual companies. Accordingly, I propose to cap the surcharge of these AOPs
at 15%, 15%. Further, the long-term capital gains on listed equity shares, units, etc., are liable to maximum surcharge of 15%, while other long-term capital gains are subjected to a graded surcharge which goes up to 37%. I propose to cap the surcharge on long-term capital gains arising on transfer of any type of assets at 15%. This step will give a boost to startup community, and along with my proposal on the extended tax benefits to manufacturing companies and startups, reaffirms our commitment to Atmanirbhar Bharat. Clarification in relation to health and education cess as business expenditure. The income tax is not an allowable expenditure for computation of business income. This includes tax as well as surcharges. The health and education cess is imposed as an additional surcharge on the taxpayer for funding specific government welfare programs. However, some courts have allowed health and education cess as business expenditure, which is against the legislative intent. To reiterate the legislative intent, I propose to clarify that any surcharge or cess on income and profits is not allowable as business expenditure. Deterrence against tax evasion. Honourable Speaker, sir, presently there is ambiguity regarding set-off of brought forward loss against undisclosed income detected in search operations. It has been observed that in many cases where undisclosed income or suppression of sales, etc., is detected, payment of tax is avoided by setting off of losses. In order to bring certainty and to increase deterrence among tax evaders, I propose to provide that no set-off of any loss shall be allowed against undisclosed income detected during search and survey operations. It has been noticed that as a business promotion strategy, there is a tendency on businesses to pass on benefits to their agents. Such benefits are taxable in the hands of the agents. In order to track such transactions, I propose to provide for tax deduction by the person giving benefits if the aggregate value of such benefits exceeds 20,000 rupees during the financial year. A few other changes are being made, the details of which are there in the finance bill. Indirect taxes. So remarkable progress in GST. GST has been a landmark reform of independent India, showcasing the spirit of cooperative federalism. While aspirations were high, there were huge challenges too. These challenges were overcome deftly and painstakingly under the guidance and the oversight of the GST Council. We can now take pride in a fully IT-driven and progressive GST regime that has fulfilled the cherished dream of India as one market, one tax. There are still some challenges remaining, and we aspire to meet them in the coming year. The right balance between facilitation and enforcement has engendered significantly better compliance, and enforcement has engendered better compliance. GST revenues are buoyant despite the pandemic. I would bring in something which I've got to know this morning, not part of my speech, but worth putting in here for the knowledge of the Honourable House. I would like to bring to the notice of this House that the gross GST collections for the month of January 22 are rupees 1,40,986 crores, which is the highest
which is the highest since the inception of GST. This has been possible due to rapid economic growth, recovery, post-COVID, This has been possible due to the rapid economic recovery post-COVID, as well as various policy and administration undertaken by central and state tax administrations. Taxpayers deserve applause for this growth. Not only did they adapt to the changes, but enthusiastically contributed to the cost of paying taxes. Special economic zones. In part A of my speech, I have referred to the proposed reforms in SEZs. Alongside, we will also undertake reforms in customs administration of SEZs, and it shall henceforth be fully IT-driven and function on the Customs National Portal with a focus on higher facilitation and with only risk-based checks. This will ease doing business by SEZ units considerably. This reform shall be implemented by 30th September 2022. Customs reforms and duty rate changes. Customs administration has reinvented itself over the years through liberalized procedures and infusion of technology. Faceless customs has been fully established. During COVID-19 pandemic, customs formation have done exceptional frontline work against all odds, displaying agility and purpose. Customs reforms have played a very vital role in domestic capacity creation, providing level playing field to our MSMEs, easing the raw material supply side constraints, enhancing ease of doing business, and being an enabler to other policy initiatives such as PLI and phased manufacturing plans. My proposal on customs side are aligned to these objectives. Project imports and capital goods. National Capital Goods Policy 2016 aims at doubling the production of capital goods by 2025. This would create an employment opportunities and result in increased economic activity. However, several duty exemptions, even extending to over 3 decades, in some cases have been granted to capital goods for various sectors like power, fertilizer, textiles, leather footwear, food processing, and fertilizers. These exemptions have hindered the growth of the domestic capital goods sector. Similarly, project import duty concessions have also deprived the local producers of a level playing field in areas like coal mining projects, power generation, transmission, or distribution projects, railway and metro projects. Our experience suggests that reasonable tariffs are conducive to the growth of domestic industry and make in India without significantly impacting the cost of essential imports. Accordingly, Honourable Speaker, Sir, it is proposed to phase out the concessional rates in capital goods and project imports gradually and apply a moderate tariff of 7.5%. Certain exemptions for advanced machineries that are not manufactured within the country shall continue. A few exemptions are being introduced on inputs like specialized castings, ball screw, and linear motion guide to encourage domestic manufacturing of capital goods. In the last 2 budgets, we have rationalized several customs exemptions. We have once again carried out an extensive consultation, including by crowdsourcing. As a result of these consultations, more than 350 exemption entries are proposed to be gradually phased out. These include exemptions on certain agricultural produce, chemicals, fabrics, medical devices and drugs, and medicines for which sufficient domestic capacity exists. Further, as a simplification measure, several concessional rates are being incorporated in the customs tariff schedule itself instead of prescribing them through various notifications. This comprehensive review
will simplify the customs rate and tariff structure, particularly for sectors like chemicals, textiles, and metals, and minimize disputes. Removal of exemption on items which are or can be manufactured in India, and providing concessional duties on raw material that go into manufacturing of intermediate products will go many a step forward in achieving our objective of Make in India and Atmanirbhar Bharat. I shall now take up specific sector-specific proposals. Electronics. Electronic manufacturing has been growing rapidly. Customs duty rates are being calibrated to provide a graded rate structure to facilitate domestic manufacturing of wearable devices, hearable devices, and electronic smart meters. Duty concessions are being given to parts of transformer of mobile phone chargers and camera lens of mobile camera module and certain other such items. This will enable domestic manufacturing of high-growth electronic items. Gems and jewelry. To give a boost to the gems and jewelry sector, customs duty on cut and polished diamonds and gemstones is being reduced to 5%. Simply sawn diamond would attract nil customs duty. To facilitate export of jewelry through e-commerce, a simplified regulatory framework shall be implemented by June this year to disincentivize import of undervalued imitation jewelry. The customs duty on imitation jewelry is being prescribed in a manner that a duty of at least 400 rupees per kg is paid on its import. Chemicals. Customs duty on certain critical chemicals, namely methanol, acetic acid, and heavy feedstocks for petroleum refining are being reduced, while duty is being raised on sodium cyanide, for which adequate capacity in the domestic arena exists. These changes will help in enhancing domestic value addition. MSMEs. Duty on umbrellas is being raised to 20%. Exemption to parts of umbrellas is being withdrawn. Exemption is also being rationalized on implements and tools for agricultural sector which are manufactured in India. Customs duty exemption given to steel scrap last year is being extended for another year to provide relief to MSME secondary steel producers. Certain anti-dumping and CVD on stainless steel and coated steel flat products, bars of alloy steel and high-speed steel are being revoked in larger public interest considering prevailing high prices of metals. To incentivize exports, exemptions are being provided on items such as embellishment, trimmings, fasteners, buttons, zipper, lining material, specified leather, furniture fittings, and packaging boxes that may be needed by bona fide exporters of handicrafts, textiles, leather garments, leather footwear, and other goods. Honorable Speaker, sir, duty is being reduced on certain inputs required for shrimp aquaculture so as to promote its exports. Tariff measure to encourage blending of fuel. Blending of fuel is a priority for this government. To encourage the efforts for blending of fuel, unblended fuel shall attract an additional differential excise duty of rupees 2 per litre from first day of October 22. A few other changes are being made in duty rates, customs, tariff and customs law, the details of which are there in the finance bill. Mr. Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. Thank you. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission,
I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. आइटम नंबर 3, वित्त विधेयक 2020, निर्मला सीतारमण जी। Sir, item number 3, Finance Bill. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2022. प्रश्न ये कि वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चौथा और देश का पहला डिजिटल बजट आपके सामने पेश हुआ। जी हां, पहली बार बजाय कॉपी पढ़ने के डिजिटल तरीके से वित्त मंत्री ने यह बजट पेश किया और यह बजट पूरी तरह से फोकस्ड रहा ग्रोथ पर। अगले 25 सालों के लिए हिंदुस्तान की ग्रोथ का टारगेट लेते हुए अब तक का सबसे ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की बात वित्त मंत्री ने कही। तो ग्रोथ पर साफ तौर पर सरकार का फोकस है और यह फोकस इस वजह से आता दिखा है, टैक्स कलेक्शन जबरदस्त है। अब तक का हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन जीएसटी पर आता हुआ दिखा है। जो बड़ी बातें हैं अब तक की बजट की वो मैं आपके सामने रख दूं। सरकार पूरी तरह से पॉलिटिक्स को, चुनावों को नजरअंदाज करते हुए इस बजट में कहीं भी किसानों, ग्रामीण इलाकों का नाम नहीं है, लेकिन फोकस पूरी तरह से स्ट्रक्चरल ग्रोथ पर है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाए और देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। इस पर फोकस करते हुए सरकार ने